बहुत ही मुश्किल मोमेंट होगा वो, क्योंकि उनको मैं देख के इंस्पायर हुआ इंडिया के लिए खेलने के लिए, और वही मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं। जैसे उन्होंने जिस तरीके से इंडिया को मैचेस जिताए हैं इतने सालों तक, तो वो मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रहे हैं। और मुझे अभी पता नहीं है कि मेरा रिएक्शन क्या होगा वो मैच के बाद, लेकिन मुझे पता है कि बहुत डिफ़िकल्ट मोमेंट होगा, सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए और पूरी इंडियन टीम के लिए, पूरे देश के लिए। क्योंकि उनको इंडियन टीम में खेलते ना देखना, वो पिछले 24 साल से किसी ने सोचा नहीं था। तो वो मोमेंट आएगा, और जो उस टाइम रिएक्शन होगा वो मैं उसको अभी तो एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आई एम श्योर एवरीवन विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड एंड वेरी सैड। बट राइट नाउ आवर फोकस इज़ ऑन दिस सीरीज़, एंड उसको जीतना हमारा पहला प्रायोरिटी। सर, ना तो मैं सिलेक्शन पैनल में हूँ, ना तो मैं कैप्टन हूँ, ना मैं कोच हूँ। मैं आई एम नॉट इन्वॉल्व इन द टीम्स सिलेक्शन प्रोसेस, सो आई वुडंट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट। लेकिन आई थिंक आप 2 मैच से किसी इंसान को बाहर ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी हमारे लिए, इंग्लैंड में भी, वेस्ट इंडीज़ में भी। जो उन्होंने लास्ट 2 सीरीज़ खेली हैं इंग्लैंड में, बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर रहे हो हमारे लिए। तो 2 मैच से आप किसी को काउंट आउट नहीं कर सकते। 2020 में तो हर किसी को मार पड़ती है, उनके बॉलर्स ने भी 200 रन खाए। ऐसा नहीं है कि उस गेम के बाद उन्होंने बॉलर्स ड्रॉप कर दिए या टीम पूरी चेंज कर दी। तो लोगों को फेयर चांस देना चाहिए, और बाकी टीम का डिसीजन है, जो उनको ठीक लगे वो कॉम्बिनेशन खिलाएं। Personally, I don't think about all that at all. If I'm good enough to score runs at the international level, I should be able to play every delivery that's been thrown at me, and I take that confidence onto the field. I don't know why if Australia, South Africa, England, anyone we play against, this is one area which is being questioned again and again. You take out and see how many people get out to the short ball. Mostly people get caught in the slips or get LBW or bowled. So we don't get out to the short ball. A short ball is just a tactic which every team uses. Even the subcontinent teams use. Pakistan, Sri Lanka, everyone uses a short ball. There's nothing special about Australians bowling a short ball, or South Africans or English bowling a short ball. As I said, we should be good enough to play it at this level, and we are confident of playing it well. And we need to worry about other things, situations in the game, how to come out of difficult situations, rather than thinking about the short ball and not thinking about anything else at all. So we're not worried about that at all. One of those games where we didn't do 2 aspects of the game really well. I think in the field we were pretty good. While bowling we were not up to the mark. While batting we played some bad shots, lost wickets at crucial times. So it was just an off day. I think if you look at our bowling in the last 20 games that we've played, it's been pretty good. And apart from the last game, one odd game in West Indies where we gave Sri Lanka about 340 runs, that was one game as well where we didn't bowl well. So these sort of days are gonna happen every now and then. I think the wicket changed quite a bit as well. A bit of dew settled down in Pune the other evening, and the wicket got a bit quicker as the game progressed. In the daytime it wasn't coming on as quickly from the wicket, but as the dew settled in the grass on the wicket, really assisted the bowlers to some extent. But we can't take that into account. We should be good enough to hit the right areas in every game we play, but that's not going to happen. We're going to have off days, and last game was one of them. It should be equal for both the teams. Any team that plays on this wicket, we always know Jaipur, you need to bat well. You need to play correct cricketing shots. You need to back your strengths, and as I said, play correct cricketing shots, and you get value for your shots. So this has been that sort of wicket, and we need to bat well to put up a good total. Well, they're pretty good. Obviously they have a lot of talent in their side. Quite similar to our side as far as young talent is concerned. Lot of players with belief in their ability, and they came out and expressed themselves. We sort of know their game plan now, what they're going to play like in India this series. If you see the last 2 games, they came out all guns blazing while batting. So
we need to sort of counter that and make them work for their runs rather than just playing freely and being in their zone. So I think we need to we need to plan a lot better against their batsmen, because they've just come out and expressed themselves and just try to not get into a tough situation. So we need to make situations tougher for them, but I think they're a very talented side. हाँ, ये एक एरिया रहा है जहाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं इम्प्रूव करने की हर गेम के साथ। जहाँ थोड़ा असिस्टेंस मिलता है हमें नई बॉल से तो हम अच्छा डोमिनेट करते हैं, फिर एंड में हम लोग कंट्रोल करते हैं। लेकिन इंडिया में आई थिंक डेथ बॉलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हमने पहले भी वनडे क्रिकेट में देखा है। तो अभी जैसे मैंने कहा कि यंग साइड है, हमने काफ़ी अच्छा किया है पिछले 3-4 महीने में, और जो 3-4 सीरीज़ हम खेलें, लेकिन एवरी नाउ एंड देन वो एक्सपीरियंस खेल के ही आता है।